धन्यवाद डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव जी। और उन सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इतना बड़ा एक बीड़ा उठाया है आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए भारतवर्ष के छात्र छात्राओं के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। इसमें केवल साइकेट्रिस्ट या कुछ वर्कर ही काफी नहीं है। इसमें समाज के विभिन्न भाग के व्यक्तियों को भाग लेना होगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी। मेरा ब्रीफ सिर्फ आज के लिए इतना है कि मैं आपको इससे अवगत कराऊं कि छात्रों में आत्मघाती व्यवहार कैसा होता है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके क्या कारक हो सकते हैं और इसको किस स्टेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको सिंपल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखने की चेष्टा की है, जिससे कि अधिक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलना बंद। स्लाइड इज नॉट मूविंग नाउ, अगेन इट वाज मूविंग एट अमूव। दुनिया में हर मिनट एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। आप समझ सकते हैं इस समस्या की गंभीरता। भारत में 2021 में लगभग 1,64,033 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये आत्महत्या पिछले 2020 की आत्महत्या से 6.2% बढ़ रही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्महत्या की दर वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आज भारत की आत्महत्या की दर लगभग 12.7 प्रति लाख है, जबकि देश भर में ये 6 से 30 तक वेरी करती। और दूसरी बात ध्यान रखिए, 15 से 29 वर्ष की आयु में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। विदेशों में अब बढ़नी हुई शुरू हुई है। भारतवर्ष में ये दर बहुत दिनों से अधिक है। दूसरी चीज समझने की क्या है, सब वर्गों में पुरुष स्त्रियों से अधिक आत्महत्या करते हैं, लेकिन इस एज ग्रुप में महिलाएं लगभग पुरुषों के बराबर या पुरुषों से अधिक आत्महत्या करती हैं। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट सोचने की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि महिलाओं के लिए, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, महिलाओं को किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं है। उन्हें क्या पढ़ना है, क्या करना है, किसको पसंद करना है, ये सारी चीजें उनको प्रतिबंधित की जाती हैं। और परिवार ये पैदा निश्चित करने की कोशिश करता है कि वो क्या करें, इसलिए वो एक अधिक तनाव में रहती हैं। उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक हो सकती। इसलिए छात्रों में आत्महत्या एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ना, आत्मघाती व्यवहार से हम क्या समझते हैं? आत्महत्या क्या है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को मारता है। तो दो चीज पे गौर देने की आवश्यकता। जानबूझकर, हम प्लान वे में अपने को किल कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो अपनी मर्जी से अपने को मार रहा है? या तो वो कोई सुसाइड नोट छोड़े, और जहां सुसाइड नहीं होता है वहां एक तरह की हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक पार्टी कहने लगती है इसको आइए आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, क्योंकि जिसने आत्महत्या की है वो ये कहने के लिए जीवित नहीं है कि मैंने अपने आप को मारा। इससे बहुत समस्याएं हो जाती हैं। अभी आपको याद होगा प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत राजपूत का केस हुआ था। वर्षों उसमें टीका टिप्पणी चलती रही। इसी तरह लखनऊ के लोग याद कर सकते हैं कि लखनऊ में कुछ ही समय पहले एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने कूद कर आत्महत्या की थी। वह केस आज तक भी नहीं खत्म हुआ। इस चीजों से ना केस की तफ्तीश ठीक होती है, ना उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आदमी ठीक से देखभाल कर सकता है।
दूसरी चीज समझने की, अटेम्प्टेड सुसाइड या आत्महत्या का प्रयास। जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या का गंभीर प्रयास किया है जिसमें उसकी इंटेंट मरने की थी, लेकिन वह किसी प्रकार से बच गया, इसको हम आत्महत्या का प्रयास कहते हैं। वहां पे इंटेंट टू डाई उस अटेम्प्ट में होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग एक गोली रेड किल खा लेते हैं या रिस्ट में चाकू लगा कर निशान बना देते हैं। यहाँ इंटेंट टू किल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों को बताने की दिखाया जाता है कि हम परेशान हैं, हमें मदद चाहिए। तो आत्महत्या की अटेम्प्ट और डिमॉन्स्ट्रेटिव फिजिकल हर्ट में हमें फर्क करना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ इंटेंट है, वहां चांसेस ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, हाँ, अब कैसे हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है या करेगा? आत्महत्या का विचार अधिकतर आदमी मौके परेशान हूं, मैं मरना चाहता हूं, या उसके व्यवहार से लगता है कि वो बहुत परेशान है, डिस्टर्ब रहता है, रेस्टलेस रहता है, उससे हम सोच सकते हैं। बहुत अधिक बार इन संकेतों को ठीक से नहीं समझा जाता और अनदेखा कर दिया जाता। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। मेरा एक डिस्टेंट कजिन, जिसके साथ हम बचपन में फेरा करते थे, करीब 40 वर्ष बाद, अभी कुछ साल पहले मेरे पास उसका फोन आया। मैं बहुत खुश था कि उसने मुझे फोन किया। वी टॉक चैटेड अबाउट अवर चाइल्डहुड एंड डिस्कनेक्टेड। 4 days later, I read in the newspapers that he has shot himself. Now this gentleman knew I am a psychiatrist, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया। मेरा कहीं से टेलीफोन नंबर मालूम किया, बिकॉज वी वर नॉट इन कांटेक्ट। उसने इतनी एफर्ट की, पर वह मुझसे कह नहीं पाया उसने मुझे फोन क्यों किया, ना मैंने उससे पूछने की जरूरत समझी। तो एक अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ फेल्ड बाय, हम दोनों ने, ना उसकी हिम्मत हुई मुझे बताया कि वो ने फोन क्यों किया, ना मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा फोन करने का कारण क्या है। इसी तरह से बहुत लोग जो आत्महत्या करना चाहते हैं, परोक्ष या अप्रोक्ष रूप में आपको इंगित करेंगे कि हम मरना चाहते हैं। कई बार हम इसको धोखे फनी रूप में उड़ा देते हैं कि भाई तुम चलो चलो आओ, चलो पार्टी करते हैं, मरने की क्या जरूरत है। इसीलिए जब भी जरा भी इस तरह की बात हो, स्पेशली टीचर्स, स्टूडेंट, जब ऑनर स्टूडेंट शोज सम एबनॉर्मल बिहेवियर, बिकम्स वेरी रेस्टलेस, तो उसको हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्यक्ति जो एकाएक बहुत परेशान हो, एकदम शांत हो जाए, तो समझ लीजिए उसने कोई डिसीजन कर लिया है कि उसकी परेशानी का सॉल्यूशन के पास। मोर वेरी ऑफन दिस इज अ डिसीजन टू कमिट सुसाइड। तो अगर कहीं ऐसा बिहेवियर चेंज दिखे टीचर्स को, और बहुत लोग टीचर्स को कहीं ना कहीं किसी रूप में कांटेक्ट करते हैं कि सर मैं परेशान हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इस किसी भी अप्रोच को हम हल्के में ना लें, उसको ध्यान से सुने, तो बहुत से लोग आइडेंटिफाई हो जाए। कुछ लोग आपका व्यवहार एक अधिक शराब पीने लगेंगे, अधिक हिंसक हो जाएंगे, उत्तेजक हो जाएंगे, जैसे उन्हें अब दुनिया की कोई परवाह नहीं। और बहुत से लोग, विशेष रूप से यंग स्टूडेंट्स, वो अपने सारे चीजें कंप्लीट कर, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, बाय बाय करेंगे, किसी से उधार लिया है उसको लौटा देंगे, पुस्तकें लाइब्रेरी की वापस करेंगे। दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल देयर लाइफ टास्क बिफोर एंड देयर लाइफ। अगर ऐसा होता है, ये भी बहुत जबरदस्त आगे चल के सुसाइड हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बताता है कि हम कैसे सुसाइड करेंगे, फला दिन करेंगे, फला जगह करेंगे, हैंग करेंगे, दवा खाएंगे या करें, तब ये एक बड़ी सीरियस सुसाइडल
इंटेंशन है, इसको कभी धीमे मत लीजिए, इसके लिए तुरंत विशेषज्ञ के पास उसको भेज देना आवश्यक है। क्या चेतावनी लक्षण है जिससे हम बचा सकते हैं कि आत्महत्या करने की में आशंका है? ये लोग अत्यधिक हेल्पलेस, इन कैटेगरी भाई मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस इनके अंदर पूरी पूरी मात्रा में देखी जाती है। वह ये भी नहीं सोचते कोई दूसरा उनकी मदद कर सकता है, क्या वो किसी से सहायता प्राप्त कर। इसी तरह से जो व्यक्ति पहले आत्महत्या का प्रयास कर सकें और उनमें इस तरह की कोई चीज देखी जाती है, उनमें चांसेस ऑफ सुइसाइड बहुत ज्यादा हो जाता है। और यदि व्यवहार में का परिवर्तन दिखे तो भी आत्महत्या करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की चेंज टीचर्स देखें या दूसरे स्टूडेंट देखें तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अब आत्महत्या कैसे करते हैं? हमारे यहाँ कॉमनेस्ट तरीका है हैंगिंग। अधिकतर लोग हैंग करके आत्महत्या करते हैं। किसी प्रकार का जहर, हमारे यहाँ बहुत से जो कीटनाशक यूज किए जाते हैं कृषि कार्य में, वो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको लोग अधिकतर सेवन करके आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। कूदना, ऊंचाइयों से या नदियों में कूदना, खुद को रेलवे ट्रैक पर फेंकना, शूटिंग और मैनी अदर पीपुल बहुत से बड़े बड़े इनोवेटिव सुसाइड करते हैं। एक हमारे यहाँ मेडिकल स्टूडेंट था, उसने सुसाइड का बड़ा इनोवेटिव तरीका लगाया। उसने क्या किया, उसने घड़ी में अलार्म लगाया और ये अलार्म इससे लगाया, घड़ी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर दिया। जब सुबह 4 बजेंगे तो ये इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए। रात में 4 गोली सोने की दवाई खाई और 4 o'clock मॉर्निंग में इलेक्ट्रोक्यूट। इस तरह के बहुत सारे एलेबरेट प्लान भी लोग बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी पता चले तो उसको हम अवॉइड बचा सकते। नाउ, आत्महत्या में व्यक्तिगत कारण तो होती है, लेकिन कंट्री का भी बहुत महत्व है। अगर देखें दुनिया भर के कंट्रियों में आत्महत्या की दर 6 प्रति लाख से 50 तक है, वेरी करती है। इतना बड़ा वेरिएशन कंट्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण होता है। जो देश जितना अधिक संपन्न है, सोशल सिक्योरिटीज अधिक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है, तो दीज आर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। जैसे पाश्चात्य देश जहां पे स्थिरता है, अच्छी सामाजिक सुरक्षा है, वहां आत्महत्या की दर है, पश्चिमी देशों में आत्महत्या की दर से 10 से 15 प्रति लाख। जबकि रशियन यूनियन और उससे जो अलग हुए देश हैं, वहां आज भी विघटन है, सोशल इनसिक्योरिटी है, और इन कंट्रीज में आत्महत्या की दर 20 लाख से ज्यादा है, कहीं कहीं तो 20 प्रति लाख से ज्यादा है, कई बार 50 के करीब। रिलीजन का भी आत्महत्या में बहुत योगदान। बहुत से धर्म आत्महत्या को अलाउ नहीं करते। जिस कैथोलिक रिलीजन में एक लोग आत्महत्या करें तो उसको चर्च अलाउड नहीं होता। इसलिए इस्लामिक रिलीजन में भी आत्महत्या की मान्यता नहीं है। तो अधिकांश इस्लामी देशों में आत्महत्या की दर 6 प्रति लाख से कम, जो कि अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। जापान उल्टा है, जापान में आत्महत्या को मरने का एक अच्छा तरीका माना गया। डेथ बाय सुसाइड इन जापान इज रेस्पेक्टेड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जापान की आत्महत्या दर सोशल सिक्योरिटी सब होने के बावजूद भी 15.3 है। ऑल द सेम फैक्टर्स, बट सर्टेन चेंजेस होने से जापान में मरने को
मरने के लिए आत्महत्या एक मान्य तरीका है, इसलिए वहां की दर इंस्पाइट ऑफ गुड सोशल सिक्योरिटी 15.3। हिंदू धर्म में आत्महत्या के बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पांडवों ने आत्महत्या की, पहाड़ों में चले गए वन बाय वन, वो एक्सेप्टेड। हमारे अपने लाइफ टास्क करने के बाद रिलीजियस पीपुल कैन डिसाइड टू किल देमसेल्व्स लाइक आत्महत्या, विच इज एक्सेप्टेबल। सती प्रथा एक्सेप्टेबल थी, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू धर्म में एक दूसरी भी मान्यता है कि शरीर मनुष्य को भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इस शरीर को नुकसान पहुंचाना भगवान के प्रति अनादर है। इसलिए सुसाइड के लिए क्लियर कट कोई हमारे यहाँ कारक नहीं। नाउ लार्जर सोशल इवेंट्स जो समाज में होते हैं, उनका भी सुसाइड पर असर होता है। हाल ही की कोविड महामारी के समय जितने भी शोध कार्य किए गए, सब में आत्महत्या करने वालों की इच्छा करने वालों की संख्या बहुत अधिकता से बढ़ी है। सुसाइड रेट क्या रहा है ये क्लियर नहीं। जब भी सांप्रदायिक संघर्ष होगा, असुरक्षा की भावना होगी, वह आत्महत्या को बढ़ा सकता है। आज के मणिपुर के अनरेस्ट में क्या आत्महत्या बढ़ रही है हम नहीं जानते, लेकिन इसका उल्टा उदाहरण भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था, तब के आंकड़े बताते हैं कि उनकी आत्महत्या की दर कम हो गई थी। वो स्ट्रेस ने सबको आपस में जोड़ दिया। द नंबर ऑफ सुसाइड इन कंसंट्रेशन कैंप्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिड्यूस। कहीं बहुत सोशल स्ट्रेस होती है तो सब लोग जुड़ जाते हैं, वो इसको कम भी कर सकते हैं। अब भारतवर्ष में अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा फार्मर सुसाइड वाज वेरी बिग इशू। सुसाइड में सबसे बढ़िया बात क्या थी, जब तक इसकी न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग और पार्लियामेंट असेंबली में बात हो रही थी, जब तक ये रेट बढ़ता जा रहा था। जैसे ही न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग कम हो गई, इसका संख्या भी कम हो गई। तो reporting is also a very important factor which leads to suicide, facilitates suicide. अगर आपको याद हो कि कुछ जमाने पहले ओबीसी का स्टूडेंट्स आंदोलन हुआ था, जिससे बहुत से लोगों ने सुसाइड किया था। कुछ लोग जो सुसाइड करने से बच गए थे, जब वो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भाई कि हमारा सुसाइड टेलीविजन पर आया था नहीं आया था। उनके सुसाइड करने का कारण था वो दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। इस तरह के सुसाइड को कॉपी कैट सुसाइड कहा जाता है। इस तरह से कॉपी बिल्ली कर दिया, वो उचित नहीं। कॉपी कैट सुसाइड कहलाता है। ये पब्लिसिटी इसका कारण। नाउ कमिंग टू एजुकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जितनी हार्ड लर्निंग की एजुकेशन है, उतना ही अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण होता है। एक जमाने में ये कहा जाता था कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रेटिंग of educational excellence was dependent on suicide rate. More suicide rate जहां पे है वहां पे पढ़ाई अच्छी हो रही, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स में तनाव ज्यादा है। दूसरी चीज, भारतवर्ष की सोचें, हमारी आईआईटीज हैं, एआईएम्स हैं, इनमें देश भर से चुनिंदा बच्चे आते हैं, लेकिन वहां अक्सर सुसाइड हो जाते हैं। एक सुसाइड अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले बॉम्बे में हुआ, आईआईटी बॉम्बे में, जहां ये हुआ कि जो बैकवर्ड क्लास से लोग आ रहे हैं, जिनके के मार्क जेई एंट्रेंस में कम है, उनसे बार बार जब पूछा जाता है, दैट कॉजेस स्ट्रेस ऑन देम, एंड एक्चुअली दे हैव टोल्ड दैट जेई रैंक शुड नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स वंस दे आर एडमिटेड इन आईआईटी। कुछ समय पूर्व एक विद्यार्थी ने आईआईटी में, एक ने एआई ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के किसी सेंटर में सुसाइड किया था। उस वक्त भारतवर्ष के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टैलेंट हो रहा है, इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए कि ये लोग वहां जाकर क्यों असहज महसूस करते हैं और उन्हें सुसाइड करना पड़ता है।
इन सब संस्थानों में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जिससे उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। भाषा हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है। मोस्ट स्टूडेंट्स जो प्रोविंसेस में पढ़ते हैं वो वर्नाक्यूलर में पढ़ते हैं, और जब वो इस तरह के संस्थानों में भर्ती हो जाते हैं तो एकदम उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए थे, यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी में बात होती है, वो अपने को असहज महसूस करते हैं। इस तरह की समस्या को हमें पहले ध्यान देना होगा, क्या हम इनको राइट फ्रॉम स्टार्ट ऐसी सहायता दे सके कि असहजता दूर हो सके। कास्ट, क्रीड, religion, all these also becomes problematical in some of this. And romantic relationships, failures and successes and broken relationships are almost always an important cause in students. परिवार का भी बहुत अहम रोल है। हमने अब तक एनवायरनमेंट की बात की, देश, शिक्षण संस्थाएं, अब परिवार। परिवार जिसमें पारस्परिक संबंध अच्छे हैं, स्थिर है, वह एक बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग है जो सुसाइड को रोकता है। लेकिन परिवार जहां तनाव है, जहां सामंजस्य नहीं है, विघटन है, वह परिवार आत्महत्या को प्रेरित करता है। हमारे देश में अधिकतर माता पिता अपना सारा धन बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, और उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके अनुसार पढ़ें, वैसे ही नंबर लाएं। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है बच्चों पर। ये भी सुसाइडलिटी बढ़ाने का एक कारण है। माता पिता अपने बच्चों के सामाजिक व्यवहार को भी, आप किससे मिलो, किससे ना मिलो, क्या करो क्या ना करो, उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो अगेन एक कारक है। और माता पिता द्वारा बच्चों पर अपने मूल्य, उनके मूल्य 20 ईयर्स ओल्ड आउटडेटेड मूल्य हो जाते हैं, जिसके कारण वह बच्चों को एक्सेप्टेबल नहीं होते, इससे वो सुसाइड करते ना। बेसिकली सुसाइड एक इंडिविजुअल डिसीजन है। हर व्यक्ति जो सुसाइड करता है वो पूर्ण सुसाइड कोई मोमेंटरी डिसीजन नहीं, वो लंबे समय से सोच रहा है कि क्या मैं इन परिस्थितियों में जी सकता हूँ। हर प्रकार की कोशिश करता है, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करता है, दोस्तों से मिलने की कोशिश करता है। जब कुछ नहीं हो पाता तो उसका अंतिम फैसला ये होता है कि अब उसके लिए मरना ही एकमात्र विकल्प है। ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, और इसमें पुरानी असंतुष्ट जीवन परिस्थितियां, मेंटल इलनेस, ऑल दीज थिंग्स मैटर। इस निर्णय के लिए क्या कारक है? निराशा, होपलेसनेस सुसाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जब व्यक्ति ये सोचता है मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं, पूर्णतया निराश हो जाता है, आशा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो जितनी अधिक निराशा होगी उतनी चांसेस ऑफ कमिटिंग सुसाइड बढ़ जाती है। असहायता, कोई मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अब सहायता पाने योग्य नहीं हूँ। हेल्पलेसनेस इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। अपराध बोध होना चाहिए, अपराध बोध। ये लोग बहुधा अपने को दूसरों की गलत, दूसरों में जो कमी है उसके लिए अपने को अपराध सोचते, मेरे कारण मेरे परिवार वाले दुखी हैं, मेरे जाने से उन्हें अच्छा होगा, मैं जो भी कुछ करता हूँ सब लोगों को उससे दुख होता है। तो ये अपराध बोध सुसाइडलिटी का एक बहुत बड़ा डिनोमिनेटर। अगर कोई व्यक्ति, लड़का ये कह रहा है कि मेरी वजह से सब परेशान है, मुझे इससे निकलना चाहिए, तो समझ लीजिए इसमें सुसाइडल चांसेस होते। और ये लोग अपना और चारों तरफ के एटमॉस्फेयर का अनरियलिस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। ये सोचते हैं बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, सब लोग बेकार हैं, कुछ भी नहीं होगा, कोई पॉजिटिव फाइंडिंग इनको दिखती ही नहीं है। इस नेगेटिव इवेल्युएशन के कारण वो डिसाइड करते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए। अंतिम क्षण
जो कहते हैं feather breaking the camel's back, कोई अंतिम घटना छोटी सी हो गई उससे वो तनावग्रस्त होकर सुसाइड का फैसला करते। तो सुसाइड की सोच को हमें समझना, इनमें से हर चीज आइडेंटिफाइबल है, हर चीज समझ सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत उम्र, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरली सुसाइड एल्डरली में ज्यादा होता है, लेकिन भारतवर्ष में 15 से 29 वर्ष की आयु में आत्महत्या की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये तेजी से होने वाले मनोसामाजिक परिवर्तन का प्रभाव प्रतीत होता है। सेक्स, पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक है। चीन इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां सुसाइड रेट फीमेल्स में आदमियों से ज्यादा है, जिसमें रिफ्लेक्ट्स चाइना पोजिशन ऑफ विमेन। सबसे अधिक संभावना है खराब सामाजिक स्थिति का संकेत दे रहा है। हमारे देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर अधिक है, लेकिन युवा समूह में आत्महत्या की दर महिलाओं में अधिक या पुरुषों के बराबर है। इसका कारण महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति प्रतीत होती है। उन्हें शिक्षा, नौकरी और विवाह के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो उन्हें आत्महत्या की तरफ उकसाता है। जैविक कारण, नाउ ये बहुत लोग समझ नहीं पाते, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं इसमें। ये पूर्णतया प्रूफ हुआ है कि आत्महत्याएं परिवारों में चलती है। एक परिवार में जहां किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है, वहां दूसरे व्यक्ति के आत्महत्या करने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ, जो लोग वायलेंट मीन्स से आत्महत्या करते हैं, उनमें एक रसायन 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक बढ़ावा मिलता है, जो कि इंगित करता है कि उनके अंदर कुछ शरीर में बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं वो आत्महत्या करते हैं, उनके कारण मानसिक रोग वो परिवार में होने का जो साइन मिलता है वो इस मानसिक रोग के कारण भी हो सकता है। मैं इस मुद्दे पर जोर क्यों दे रहा हूं, लेकिन जहां कहीं आत्महत्या होती है वहां एकाएक पूछा तो क्यों, या तो टीचर्स ने परेशान किया, या स्टूडेंट ने परेशान किया, या लव अफेयर था, या प्रॉब्लम थी। ये कोई नहीं सोचता कि इसका कोई आंतरिक कारण भी हो सकता है। बहुत सी आत्महत्याओं में केवल आंतरिक कारण होते हैं, बाहरी कारण कोई नहीं होता। इसलिए जो एक हमारा लॉ है कि आत्महत्या में उकसाने वालों को सजा दी जाती है, अबेटर्स ऑफ सुसाइड आर गिवन सेंटेंस, आई थिंक वी शुड रिकंसिडर दिस। अबेटर्स को सजा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ना मानसिक बीमारियां आत्महत्या की कारक होती हैं। जैसे मैंने बताया, आम जनता में 12 प्रति लाख होते हैं, जबकि जो लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं उनमें आत्महत्या की दर 1% हो जाती है। यहाँ 1 लाख में कितना हो जाएगा, 100। सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां जिनमें होता है, जो लोग ड्रग इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस, उनमें सुसाइड की संख्या बढ़ जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें है, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बीमारी का उचित उपचार आत्महत्या की दर कम करेगा। लोग अधिकतर उपचार बीच में रोक देते हैं, जिससे आत्महत्या बढ़ जाती है। डिप्रेशन में मैंने अलग एक स्लाइड दे दी कि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। पूरे जीवन में लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। और ये भी ध्यान रखते, डिप्रेशन महिलाओं में पुरुषों के अनुसार के से दुगना होता है। जैसे सुसाइड रेट भी स्त्रियों में ज्यादा है, तो डिप्रेशन रेट भी स्त्रियों में ज्यादा है। अधिकांश अवसाद जैविक कारणों से होते हैं।
इन व्यक्तियों को बार बार नकारात्मक सोच, रोने की, निराशा की भावना होती है। आमतौर पर अवसाद का पारिवारिक इतिहास इन लोगों की फैमिली में देखें तो कई लोगों को डिप्रेशन होगा। इन प्रारंभिक डिप्रेशन को लोग कहते हैं अगर डिप्रेशन को डिफीट कर लिया जाए तो चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग रेट ऑफ डिप्रेशन आर वेरी हाई। नाउ टेक होम मैसेज क्या है? आत्महत्या 14 से 29 वर्ष की आयु में बढ़ रही है। आत्मघाती निर्णय आमतौर पर लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद एक सुविचारित निर्णय होता है। दिस इज नॉट ए सडन डिसीजन। इसलिए किसी एक फैक्ट को ही कहना कि इसकी वजह से आत्महत्या होगी, ये गलत होगा। आत्मघाती व्यक्ति अक्सर इस दौरान व्यक्ति मदद मांगता है, दूसरों के पास जाता है, सोल्यूशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हर जगह असहायता, यही पीरियड है जब हम उसको पकड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सुसाइड रेट बढ़ने की संभावना। छात्रों की पृष्ठभूमि और लैंग्वेज इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण कारक है। आत्महत्या करने वास्तविकता का मूल्यांकन करने वाले आत्महत्या ने जो करता है वो रियलिटी को रॉन्गली रीड करता है। यह मन के नकारात्मक फ्रेम से प्रभावित होता है। चेतावनी के संकेत क्या है? एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, बार बार होने वाली विफलता, बाधित प्रेम संबंध, आत्महत्या के लिए एक व्यक्ति या संस्थान को दोष न। ये सबसे बड़ी कमी लोग करते हैं कि फलां की वजह से। आत्महत्या किसी के कारण नहीं होती। आत्महत्या व्यक्तिगत आत्महत्या में मानसिक बीमारियां बहुत कॉमन है। शीघ्र पहचान, शीघ्र उपचार से ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग आत्महत्या से जुड़ा होता है। दोज हु आर ड्रिंकिंग और टेकिंग हेल्प, उनमें शराब में आत्महत्या की। शिक्षक जो छात्रों का निष्पक्ष समझाएं, उन्हें शुरुआती संकेतों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए और आत्महत्या को रोक सकते। स्टूडेंट कोई ना कोई किसी ना किसी टीचर के पास जरूर जाएगा जब उसे प्रॉब्लम होगी, और यही वो पॉइंट है जहां हम उसको आइडेंटिफाई करें। शिक्षकों और छात्रों के बीच ओपन कम्युनिकेशन अगर होगा तो चांसेस ऑफ ना हियर, जो मैं पहले कह रहा था, ये अभी 2-3 दिन पहले के बाद है। These two individuals were imprisoned for abetting the suicide of someone in Haryana after 8 to 10 years. Now they have been released that they were not the abettors. So जल्दी से किसी को इसका कारक नहीं मानना चाहिए। ये जो स्लाइड में कि ये मैं विशेष रूप से इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। ये रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाइड में लिखा शिक्षक ने डांटा, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। दिस इज ए वेरी गुड सुसाइडल रिपोर्ट, दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। लेकिन टेकिंग अवे मोबाइल टू माइनर गर्ल्स किल सेल्स, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपको। मोबाइल छीनने से 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अंदर वो लिखता है कि ये 2 लड़कियां कॉलेज ड्रॉप आउट थी, इनको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा, तो मोबाइल छीनना केवल कारक नहीं था, ये पहले से अपसेट थी, कोई इनको परेशान कर रहा था, और इन चीजों के कारण ये सुसाइड हुआ लगता है। इसी तरह से जब भी रिपोर्टिंग करें किसी एक कारक को हम ध्यान में दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और कोई भी प्रश्न इस संबंध में कोई पूछना चाहे उसका स्वागत। धन्यवाद। हेलो। यस हेलो। हाँ सर, आपने कहा कि और लोग सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल डिसीजन है। जी। मैं इससे इसलिए एग्री नहीं करता
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक पर्सन को कंपेल करते हैं कि वो सुसाइड कर लिए, इसीलिए जो बहुत सारे दूसरे फैक्टर। हाँ, पर्सन्स भी और फैक्टर्स भी। फैक्टर्स तो हाँ पर्सन ही क्रिएट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली तो क्रिएट होते नहीं है। जैसे किसी आदमी के ऊपर झूठे मुकदमे 5-6 लोगों ने डाल रखे हैं, ठीक है। अब वो बेचारा घूमता है दिन भर, काम धंधा छोड़ के कचहरी पे पैसा बर्बाद करता है, और बाद में वो सुसाइड कर लेता है। तो उसका इंडिविजुअल डिसीजन थोड़ी है कि वो सुसाइड कर ले, या दूसरा तरीका है वो पहले सबको चारों पांचों को मारे और फिर सुसाइड करे, जिन्होंने झूठे देखिए, केस कर रखे हैं, क्योंकि इंडियन सही सही, जुडिशियल सिस्टम तो बहुत घटिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इससे पूर्णतः, जो आप कह रहे हैं मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन ये झूठे मुकदमे कितने और लोगों पे चल रहे हैं? क्या सबने सुसाइड कर लिया? ये व्यक्ति सर विशेष जैसे फेलियर सर होती है। देखिए, मेरी उसके बात पास सुनिए। पैसे की कमी है, अब वो वो वकीलों को वो पैसे वो दे नहीं पा रहा, घर चला नहीं पा रहा, तो क्या करे वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं, क्या झूठे मुकदमे किसी एक व्यक्ति पर ही चल रहे हैं? आज समाज में हजारों लोग इस प्रकार के मुकदमों से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें से 100 में से 2 या 3 सुसाइड करेंगे। इन 2 या 3 में कुछ अपने कारक भी हैं। मैं इसी पे एम्फसाइज करूं, वो एक कारक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, वो एक कारक है। लेकिन उस कारक को ऑपरेशन में लाने के लिए इनमें जैसे एग्जाम में फेल हो रहे, लाखों बच्चे फेल होते, कोई 1% सुसाइड करते। जो 1% सुसाइड करते हैं उनमें कुछ अन्य का, कहीं पे फैमिली सपोर्ट नहीं हुआ, कहीं पे आर्थिक सपोर्ट नहीं हुआ, कहीं पे उनकी अपनी मानसिक स्थिति खराब हुई। तो इट्स ए मल्टी फैक्टोरियल प्रैक्टिस। जब हम किसी एक को ब्लेम करने लगते हैं तो एक ओपिनियंस नहीं रहती, दूसरी जब इसका इन्वेस्टिगेशन कोई करना चाहता है तो सब लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, सच बात कहना ही नहीं कोई चाहता। मान लिया स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया किसी सिचुएशन में, वहां के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब झूठ बोलने लगते हैं कि हम ना फंस जाए। इस फंसने की प्रक्रिया के कारण ना उसका सही निष्कर्ष निकलता है, ना सही आदमी उसको में आइडेंटिफाई होते हैं। तो जितना हम किसी भी चीज को एक व्यक्ति विशेष को ब्लेम करने की जगह उस पर को सुसाइड पोस्टमार्टम करें, साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम, व्हाट आर ऑल द फैक्टर, अगर कोई स्पेसिफिक उसमें निकलता तो उसको मान सकते। थैंक यू सर। Well, try and generate questions and we can discuss one by one. I still say if there are any questions, we can still talk about it at this point of time or maybe during this discussion. As I explained in the beginning, these are our activities and at some point of time there was a question कि हम डिप्रेशन के बारे में बात करें या सुसाइड के बारे में बात करें, हमें बातें बहुत सी विषय पर करनी है। अभी जो रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारे यहाँ एक दैट्स द मेन डॉक्यूमेंट विच जनरेट्स डिस्कशन। इस रिपोर्ट में जो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, पहला सवाल तो ये यही सामने आता है कि हमें जो संख्या बताई जाती है
वो कितनी सही है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सी रिपोर्ट ऐसी हैं, सारी दुनिया में सुसाइड इज अंडर रिपोर्टेड प्रॉब्लम, कम से कम 5 से 6 गुना ये कम बताया गया है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हमारे देश में ये फाइंडिंग आई कि करीब 6% से ये आगे बढ़ रहा है। मतलब आप देखिए कि पिछले 20 सालों में 2001 से 2021 में अगर आप देखें तो सुसाइड के रेट में कम से कम 2 गुना, 6.2 से ये 12 हुआ है, और स्टूडेंट पॉपुलेशन में 5 से 8 हुआ है। अब कई लोग कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, ये इसे रोकना पॉसिबल नहीं है। मगर जब हम सुसाइड के आंकड़े अकेले नहीं देखे जा सकते, इन आंकड़ों को समाज में और जो भी हो रहा है, जो जो आर्थिक परिस्थिति है, जो सामाजिक परिस्थिति है, जो युवा वर्ग के सामने जो चुनौतियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी बहस चल रही है कि एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन के बाद जो स्टूडेंट सुसाइड का की समस्या है, क्या उनका आपस में रिश्ता है या नहीं है। मैं ये सवाल सिर्फ सामने रखता हूँ। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आपके विचार हमें सुनना है। इसी तरह दूसरा सवाल आया है कि अगर समाज में अनएम्प्लॉयमेंट है या अपॉर्चुनिटीज उस तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो क्या स्टूडेंट्स के सुसाइड के रेट पे, संख्या पे उसका कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। कोई बोलना चाहेगा इस पे, किसी की, इज एनीबडी ओपन फॉर एनी कमेंट? These two aspect is Professor Dalal has he joined? No, I don't see him. मैं बोल देता हूँ दोनों। हाँ प्लीज आप बोलिए सर। ये इसका 1-to-1 कोई कोरिलेशन नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जहाँ पे जैसे एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज बिकम वेरी हाई, people pay large fees, and if they do not get proper employment, then it definitely a stressor. But again, no single factor is directly responsible. If there are other factors, this single factor can be the last feather on the camel's back. Yeah, that's similarly job, ये तो joblessness or non-availability of jobs has been accepted as a very major factor leading to suicide. But again, this alone is not enough. This plus something in the individual. These things, when they will get together, suicidal behavior can occur. किसी एक फैक्टर को हम कॉज नहीं मान सकते। सुसाइड इज ए मल्टी फैक्टोरियल, क्योंकि कॉज के साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को देखना पड़ा। क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है? इफ समबडी हैज अ लविंग फैमिली, somebody has people to look after him, he is more likely to not commit suicide. If somebody is lonely, he has lost love, he has no monetary facilities, he is more likely to commit suicide. So all these things are part of a big web where every little things adds together. Yes, I mean this is very well accepted statement that suicide is a multifactorial problem. Rather, we would say that there is a biological dimension. Some people are vulnerable because of social situation, biological condition, genetic conditions. Then there are psychological stressful situations, social stressful situation,
there can be a particular specific precipitating factor, a potential life event which might push an individual towards taking a particular action. That stressor or that tension in the family or in the teaching institution or in your job may be severe enough or may not be severe enough. In both the condition, depending upon what is your vulnerability, people take decision for making an attempt or not making an attempt. When they decide about making an attempt, there are different categories of attempt. So there are three different kind of attempts people generally make. One, they decide to do something and leave nothing to chance. That means they have a very high suicidality, want to make sure that they succeed in killing themselves. So this is one subgroup of suicide behavior. Though the factors are same, all categories are multifactorial: biological, psychological, social, spiritual, religious, personal, and family. But within that, there are different permutation and combinations. So one of the combination of factors is this, where people make an attempt in a manner where they leave nothing to chance to save themselves. And you will find that many people who use violent methods, for example, taking a gun and shooting themselves, or jumping in front of a train, or jumping in front of a truck on a highway, or taking intravenous overdose drugs, etc. So they have definite knowledge how much lethality, what instrument to use, what chemical to use, how much to use. They have the information, and if they don't have information, they try and research and find out the information and then implement it. What is the time? They will choose a place where there is possibility of intervention by anybody is minimum. They will choose a time when rest of the world is sleeping, and even if you want to save that person, you cannot save. They do not raise any alarm bell, speak nothing. That means they organize the scene of attempt in a manner that they succeed. So this is one type of suicidality. Now, the second type of suicidality, which is most common, is known as ambivalent, where a person has problem of moderate degree. If there is depression, depression is of moderate severity. If there is stress or conflict, that is of a moderate degree. There is ambivalence. Should I do this? Should I not? Should I resolve my crisis in manner A, or should I resolve my crisis in manner B? Ultimately, the person decides to leave the final decision to God, that it is better that somebody else decided, and they leave the outcome of their act to chance. So they use a method which they are sure may kill, may not kill. तो जैसे कि चूहे मारने की दवाइयां खाना, या फेनाइल, या दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सो द अमाउंट दैट दे विल यूज इज मॉडरेट. बहुत से लोग इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ फास्ट द हेल्प इज अवेलेबल, कितनी जल्दी इलाज उन्हें मिला है. अगर ये हादसा गांव में हो रहा है और अस्पताल नहीं है, तो डेफिनेटली जो आदमी मरना नहीं चाहता था वो भी बाय डिफॉल्ट लैंड्स अप डाइंग. और अगर वही हादसा शहर में होता है जहां अस्पताल है और उसे ले जाया जा सकता है, सो टू provide help, this is another catch in giving, that how many people really wanted to kill themselves and how many land up killing themselves. This statistics cannot be analyzed, cannot be gathered, because a lot depends upon how quick medical services are available. Now, the third variety of suicide is such where people make sure that they make an attempt but do not die. So they organize the method, the modality, the scene, the place, the time in such a manner that they do not die.
they use the molecule, the method, which is so mild that it will make sure that their purpose of communication is established. They succeed in expressing that I have a mental pain. My situation is as bad as one should die in that situation. I do not, my situation doesn't allow me to live, but I'm living on. I don't want to die, but this is the way I express. Many times it is situational because of social stress, psychological stress, or problems within the personality, where you will find people slashing their hands, their wrist, their palm, and taking minor doses. These are the people who utilize the hospital casualty multiple times. We have seen people making 20, 30, 40 attempts in their lifetime and keep coming in the hospital. You ask them, what is this? Why you are doing it? So they have standard answer. I cannot really tolerate the pain of life. And try to make an attempt to kill themselves. So there are many other types of suicide behavior which has been described. For example, whether chronic smoking would be described as chronic suicide or alcoholism is described as chronic suicide. You may have, what is more important to remember, that everybody who has attempted suicide is at a higher risk for a repeat attempt at suicide. If we see, say, 10 years duration after a suicide attempt, we will know that about 50% of this number makes another attempt in next 10 to 15 years. What it means, what it says, that people who attempt suicide and survive, if their problems are not resolved, for example, if they are suffering from depression, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, etc., and the treatment is not given, they remain untreated, their chances of making another attempt remains very high. But the good thing is that by making an attempt, they have informed you. They have told you their emotional state. You now know that here is a person in my family who is vulnerable. So it gives you an opportunity to design a care which is specific and good for him, and it gives that person an opportunity to receive help. Not in this is identification of a person is extremely important. So, for example, if we say that whether a university should have a database for people who have attempted suicide, a university which has, say, maybe 10 lakh students, is it possible to have a database where they can find out who is the person who needs more specialized care, much more attention in terms of educational support, financial support, interpersonal support, or social support, or spiritual support for that matter? I don't know. This may be seen as a bias, this may be seen as a stigma. Nobody would like to maintain that kind of database. But if we are talking about logistics, that how do we design preventive programs? How do we help people? Our first challenge is to find out who is at risk. And the one group which remains at group is the one who has attempted suicide. They've gone to the hospital and returning back. Now, another important issue for the student and the teachers, according to me, is to receive a patient who has received a student who was diagnosed with depression, has taken treatment with psychiatrist, and is returning back to the school, to the class. It is extremely challenging because of stigma. People don't look at that person. People don't like to talk to that person. Teachers do not empathize because they do not probably have enough information about what depression is, how they keep that person, they pass the judgment and keep them responsible, make them responsible that, look, you are different, you are inferior because you tried to kill yourself. You are suffering from depression because you cannot sustain the pressure of this world. You are not the same he-man as somebody else is.
how do you deal with this kind of social thought process, the cognitive social consciousness which we have in society, which according to me is very specific for country to country, state to state, gully, mohalla to mohalla, and is a major challenge to solve. I think the opinion leaders in the school and others will have to give some thought to the challenging issues. Dr. Agarwal, would you like to comment at this point of time? No? No, I don't have any specific comment to make, Right. but what you're saying is these are very important issues, and the most important thing is database, etc., are again quite faulty. Nobody gives information on this. Even the students will not like to tell the institution. Yeah. And what I've seen in real life, if somebody has attempted suicide, the institutions throw them out. Yeah. So, They don't want to give them admit, because if he or she commits suicide, so they will be blamed. yeah. This aspect of suicide, we have to, as I emphasized earlier, if we start blaming institutions or individuals, then suicide prevention would become much more difficult. Even in families where a new attempt suicide, the families tries to send them to their mother's place so that if she commits suicide, we should not be blamed. Yeah, This aspect has to be kept in mind. I think our major roadblock in doing anything is stigma. And a lot of stigma is because of the legal position in India. And I don't see much. See, we have been watching this debate last 30 years. First, Bombay High Court stuck it down, then Supreme Court stuck it down, then it went into review, it was revived, and again, the position continues. The new mental health bill is quite ambiguous. It doesn't help. So the legal position is framing, is allowing people to take a social position and discard people. The fear of being abandoned, fear of being labeled, fear of being called names is not allowing people to express that they have depression or they have suicidal ideas or they have emotional problems. Because the way our society looks at the people, we are imagining that everybody is a hero in our community. All sons and daughters, they are heroes. They just cannot have emotional problem. And if somebody has emotional problem, she is out, is black and white, the kind of, but the fact of the matter is that all kinds of people have to exist and live respectfully in the family, in the community. How do we deal with this stigma is a big challenge, and I think I will probably, I'm getting the idea to run a essay competition for our people to write what do they, I mean, as mental health professionals, we have certain opinion, which may be based upon some data, some observation. But do people think about getting rid of stigma related to suicide? Do people who have attempted and they have, yes, Dr. Devi, please. Dr. Saab, I think what I'd like to, I think two things come out of me. One is the very aptly pointed out that this is a multifactorial problem. Absolutely. The other thing which strikes me after this, listening to all of you, is that we need to have a social conversation on this subject. It's okay to have an academic discussion. It's okay. I mean, we're doing our best with this, but there has to be a conversation in society about this whole issue of depression and suicide. And as the academic leaders in this profession, it's your job to open this to debate in society and make it acceptable
to talk about mental illness, depression, suicide, and so on, because what do we see if somebody commits suicide? The stock answer from society, the family, वो तो पागल था, वो तो पागल था, वो पागल था. उसके, they don't want to go behind the fact कि why was he exhibiting those sort of behaviors that you want to classify that person as crazy. That mental illness, the depression part, you don't want to. And you're very right. It's a question of stigma, because in a society which still practices arranged marriage, which family would want to marry in to a family where there's this suicide has taken place, where people, even if you go to the village, they're going to say, oh, this family's has a history of suicide. Do you want to take a daughter or a son from that family who may be mentally ill? And that's not acceptable. That's not right. How do we change that thought process? That has to be a matter of concern, I think, for all of us. Thank you. Yeah, Dr. Dwivedi, I hear. I mean, there are issues with mental health. There are inherent problems of stigma. It is stigma awareness, stigma awareness. Now the stigma is one set of problem. Awareness is a different set of problem. But the denial is a third set of problem. I do want some discussion for people that we know that here is an epidemic of psychological stress for students. For example, right. I mean, even if we see the Government of India last year, Ministry of Education instituted a survey through NCRT, about 3 lakh students from 21 states, they gave the data. And the report is published about psychosocial status of students. And that report also says about 40% have committed that, I mean, made the statement that we are feeling undue or severe pressure. 25-30% have clearly said they have anxiety and depression. Okay. Any society where 50% people say that we have problem, they are saying they have, for example, if you imagine alternate house having a brain fever, how would you respond? Here, every report is saying that half of our students are under pressure, and what are we doing? What is the response? What is the response of the college? What is the response of the college teachers, the principals, the government, and the families? This is a problem. We feel कि ये बरसात का पानी ये मेरे घर में नहीं आएगा, ये हमेशा आपके घर में रहेगा. The denial is, and we are so self-convinced कि नहीं ये तो हमारे बच्चे को डिप्रेशन नहीं होगा, दूसरे के घर को उनको तो होता रहता है. What do we do at that stage? How do you deal with denial in the community? Anybody? I see our colleague Hemant Dikshit has joined. Would invite him to, because we missed him. Hemantji, can you join us for your initial comments? I don't see him. Okay. All right. So we continue. Anybody want to respond to what I said? Oh, Professor Murthy would like to invite your comments. Yeah, I would like to, if you don't mind. No, please. Sorry, my line doesn't allow me to come on the camera, so forgive me. I hope you are able to hear me. Yeah, I can see you. I can hear you. Yeah, thank you very much. I hope to be able to see tomorrow, day after, when you can see me. Yeah. One of the points that we are burdened because of the history of mental health is the deviancy model. Till about 50 years, much of mental illness was seen in institutions. What happened? Your voice, Dr. Murthy, you're not. Please check your. No, you're not able to hear me? No, now I can hear you. Yeah, please speak. Yeah. The point which I'm making is we are looking at the, like Rajesh
Something is wrong end with. point. Sorry, you're not able to hear me? We can hear you, but in between it goes. Please continue. Okay. Rajesh Tagi made a very interesting point that we are looking at the end point and talking about how to prevent it. Yeah. It is like the problem with Ganges pollution, you know, trying to clean the water rather than prevent the pollution coming into that. Yes, yes. Now you'll ask me immediately, why is this occurring? It's occurring because we have a legacy of negative presentation of mental health for historical reason, nothing. Because we didn't have any other alternative. They were kept in jails, they were kept in mental hospitals, there was a special legislation for mentally ill people, all sorts of things. And so everyone thinks of it as something which happens to others. Yeah. The thing that I have realized in the last 10 years, particularly with my own work with people who have cancer and caregivers of developmental disabilities, is that we have to move the dialogue from deviancy to normalcy. What do I mean by that in relation to suicide we are discussing today? We have to accept that all of us are capable of attempting suicide or committing suicide, and it is the vulnerability that we have to accept it. Similar to vulnerability to develop epilepsy is there in every one of us. That's right. Now you will immediately say, what do you do then? Starting with that vulnerability, you talk about these are the things you can do to become strong. For example, there is enough evidence to say that daily exercise, sleep, yoga, connectedness, nutrition have tremendous amount of things. Only just yesterday I saw a paper, a meta-analysis showing that exercise is a very good preventive method for depression. No one talks about it. Similarly, when you have a distress, we must give them tools which they can use it at their own level. Like, for example, when we had COVID, we wore a mask, we washed our hands, we kept a distance. Similarly, when you have distress, you can share with others, you can journal, you can listen to music, and more than that, use your religious, spiritual things to find meaning and purpose in situation. Now, none of these 10 things which I have talked about, no one talks about it. So, if you were to present, let me just give you another analogy and stop with that. For example, if the beauty parlors were called ugly people come here, would anyone go there? They say, use this tube, this powder, this is oil, use this shampoo, you'll be good. But when you want to become more beautiful, come to the beauty parlor. We never present mental health in that manner. What we need to do is that, look, you are capable of taking care of your own emotional health. These are the tools of lifestyle. These are the skills you can use when you have a problem. In more than that, when you come to me. The same way it happens. For example, if I'm using a powder or a shampoo or whatever it is, when I want to go for a marriage, I'll go to the beauty parlor to become more beautiful. I think the paradigm has to be shifted. And you might say, why is it not occurred? For example, 20 years back when I worked with the World Health Report, we didn't talk about this because we were still preoccupied with the services. But in the last 20 years, I can give any amount of literature. There is enough evidence to show we can promote mental health. And that is the issue that we have to talk about. We don't talk about saying that don't commit suicide, you are vulnerable, you can become strong. Once I know I can become strong, then when I become weak, I go back to become stronger to the psychiatrist. This is a very completely new way of thinking, Amresh, and I think time has come for all of us. Otherwise, as Dr. Saxena said when he was in WHO, when it comes to mental health, all countries are like developing countries. It will be so as long as we keep talking about the deviancy model. What we need to do is to move to the normalcy model, strengthening model, using the cultural strengths. For example, 1/3 of the people, I just read last week, with this comment I'll stop. Last week I read a APA psychiatric news item saying that 1/3 of the people in grief become abnormal grief reaction. In India, we rarely see grief-related issues because we have cultural ways of handling grief. I'm not glorifying simply. For example, in the last 50 years, there have been just 3 major papers on depression in India. One by Neki in 1977, other one by Dr. Gurmeet Singh, and third one recently. Why? Because grief is handled in a social manner, cultural manner.
Similarly, there is loneliness, there is old age, there are a number of things. All of us have to go back to see that we move away from this deviancy, abnormality, detection, treatment, to saying that, look, everyone is capable of being mentally healthy, and these are the things you can do. When you do that, then the persons will come easily when they have a problem. Thank you very much. Thank you. I think you gave true explanation why did we call our project Mansik Shakti. I agree. Congratulate you on that. Because thank you. This is what we thought of, moving the focus to our own self, taking responsibility and recognizing ourselves. Everybody, like you tend to recognize, will you develop a heart attack? Do you have a high cholesterol? Is your weight going up? Should you do exercise? How much? Which gym? Etc. etc. Same way, everybody is different, and vulnerability does not mean disease. Vulnerability means you may develop, or some of them will develop if intervention is not done. What is the best possible thing which can be done for people is self-help or self-development. So I divide this into two sets of psychological factors. I say that we are born with certain psychological characteristics, like our ability to read, write, remember, relate, love, hate, etc. These characteristics may go down, may become less effective. If that happens, we have to make it more effective. For example, somebody is 40-year-old and says, "No, मैं तो भूलने लगा हूँ भाई, अब मुझे याद नहीं रहता." So he's telling you a marker. It's a marker that he may develop dementia, he may develop depression, he may be having stress, he may be having any other issue. But he is definitely telling, please talk to us, talk to me. So a window is opened, and he is not bothered about stigma when he says, मैं भूलने लगा हूँ. किसी भी महफिल में बैठ के लोग बोलते हैं, no problem. So our existing psychological characteristics show change in its effectiveness. That is a sign. Then we do have certain psychological virtues which we need to inculcate, imbibe, and enhance. For example, developing trust, faith, connectedness, interrelationship, social interrelationship, being able to say what you want to say, being able to relate how you relate. So these, and then I say, please bring back the focus from the rest of the people in society to yourself. Examine yourself. Self-assessment tools. We are working on it. Self-assessment tools, and maybe in few months' time I will be able to speak more about it. Developing a handheld app for self-assessment of mental health, psychological characteristics, and virtues. That what is deficient in me? How can I improve that? So if I am a man of impulsive character, if I act before I think, can something be done? Is it pathological? Is it serious? Is it not serious? And as you know, behind about 50%, 40% of suicide impulse, the basic psychodynamic or psychopathological trait is impulsivity. So our psychological characteristics very well translate into morbidity. They provide us opportunity for identification and intervention. Psychological virtues give us therapeutic means. So how do we develop trustworthy relationship? Maybe with your teacher, with your friend, with your girlfriend, with your boyfriend, with your son, daughter, whosoever. If you do not have the fundamental traits of understanding a relationship, obviously the relationship crisis is going to knock at your door. So psychological virtues are second. So I just gave a few examples that focus of intervention must shift to internal issues of individuals. I quite agree, and I think
this is the area that relates to not only prevention but prediction of possible mental health abnormalities. And yes, Dr. Dwivedi, are you saying something? I like the analogy Dr. Murthy just gave. I really think that is so relevant and very well stated. Uh, we need to adopt this. And his example on how come we have very low rates of grief related suicide, it's really it's hit me because would because of our system कि death के बाद तेरही है 13 days of mourning. It's a socially accepted period to grieve, and then for 1 year you follow certain rituals. That's a socially acceptable model for grief. So it struck me that we don't have any model for depression and mental illness, and maybe that's our biggest issue. How do we make it go from a deviance model, as you were saying, to a normalcy model? That's a very, very great insight, and I think he's setting us on the path that needs to be taken. Thank you. Yeah. So I think I have a request. Is Dr. Sheila Mishra around and she wanted to make some point? Dr. Mishra, can I invite you? No, she's not there. Okay. He's not there anymore. No, yeah. Is there anybody else who wants to share any thoughts or express any opinion about this webinar before we? Yes. Hello, I'm Dr. Ruchika Verma. Can I take please, your please. 5 minutes? Please. I'm Dr. Ruchika Verma. I'm working in CMP Degree College, which is a constituent college of Allahabad University. Yes. And I'm convener of the psychology department. And CMP is a college which has a strength of around 17 to 18,000 students, and it comes after Allahabad University in terms of strength of students. My concern is actually, first of all, I would like to congratulate. I'm really happy seeing so many people in this webinar whom I always used to admire for giving such good research work. And I used to read research papers by many of you. Thank you so much, sir, for organizing such event. My first concern, although I joined little late, but the first concern which I feel is very important is the psychosocial variables which create problems in the lives of students. Because normally what is happening that these days migration due to education is a very, very common phenomena. And due to this, even if like students, even in CMP in our college, students comes from outskirts, they from the outskirts of Allahabad, and many of them, they I think almost 80% of students are not living with their parents. So there is a whole confusion of search for an identity, autonomy, freedom, as well as fear of loneliness. So now there is a whole culture which is developing very fast, even in cities like Allahabad, where students are living in rooms, taking an independent accommodation, living with the peer group, and developing a sense of independence where there is hardly anyone to guide them whenever they have some kind of conflicts. So in our college also, we have recently opened a center, a wellness center or happiness clinic kind of a thing, where students comes to discuss their problems. I just want to ask one thing, sir, that since such a nice project has been initiated, Mansik Shakti, can this project help college students at a larger scale in some ways, especially in Uttar Pradesh, like we are in Uttar Pradesh, where the culture is almost similar in most of the cities. So can we think of some kind of program from your side where we can
do some kind of mass counseling or awareness programs for mental health, which can be of very, very useful for the students. Yes, thank you very much. It's wonderful knowing you and your college, and I've heard about the institution. And I'm so delighted that you have joined and you're sharing your thoughts. In fact, we have common purpose. The very purpose that we thought of organizing this meeting is to bring like-minded people together. We know that there is no single model which is suitable for the entire country. It is going to be different for Allahabad, Lucknow, and places in Karnataka, places in Gujarat, Punjab, everywhere, because of cultural differences. What we are looking at is to develop strategic, say, common, effective model of care. Now, care, when I say, we are not talking about something which is active psychological, psychiatric intervention, what we see, what we do in the hospitals. But we are interested in doing research on community-based intervention. We must know what will work for the सबसे जरूरी ये है कि किस समाज में किस ग्रुप के लिए कौन सा उपाय कारगर है. जब तक हम ये ना जाने, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये जो चलन है कि आप हॉस्टल में मत रहिए, हॉस्टल के बाहर कमरा लेके रहिए, अकेले हॉस्टल खाली पड़े. पहले हॉस्टल होते थे, वार्डन होते थे, दोनों के बीच में कोई संवाद होता था, बहुत सारी समस्याएं वहां सुलझ जाती थी. कम से कम एक अभिभावकों को ये मालूम रहता था कि कोई गार्जियन है, कहीं कुछ हो जाए तो कोई कहीं जा सकता है. मगर आप व्यवस्था तो नहीं बना सकते. व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. तो मेरा पहला सुझाव उसमें कि ये है कि नीड असेसमेंट सर्वे जो पीस ऑफ रिसर्च है, हम चाहते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसका प्रयास हो. आप चाहेंगे तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको भेजेंगे. जब तक हमें ये मालूम ना हो कि किस यूनिवर्सिटी के, और ये काम तो छात्रों को स्वयं करना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट हैं, वे सरकारें बनाते हैं तो अपने आप को और अपने को बनाने में या ये बताने में कि उनकी क्या समस्या है, उन्हें झिझक नहीं होनी चाहिए. अल्टीमेटली तो रास्ता उन्हें ही निकालना है. हमने रास्ता निकाल के दे भी दिया तो भी उसको इम्प्लीमेंट तो वो खुद ही करेंगे. इसलिए मेरा ख्याल है कि दो चीजों से हमारी पहली बात जो एकेडमिक डायलॉग है, कॉन्फ्रेंस एंड वेबिनार्स, रिसर्च एंड डिस्कशंस, एंड देन डूइंग नीड असेसमेंट सर्वे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे. और आप उसमें जुड़ना चाहेंगे हमसे तो हम आपका स्वागत करते हैं. थैंक यू सो मच. कोई, is there anybody else who would like to share ideas and make comments, participate in our programs, volunteer to do something more? We are getting together again tomorrow. There will be a session by Professor P.K. Dalal and Sujat Kar, additional professor of KGMC. They are going to talk about causes of suicide and risk factors and doing risk assessment in the community. An interesting topic. But today, before we wind up, is there any opinion which anybody would like to express? I see still we have about more than 40 delegates with us. So it's very encouraging for me to see late evening in India, though it is morning at my place. Yeah. Dr. Murthy, you want to speak something? I can come back again. You know, when I was working with cancer patients, yes, I'm using this example because cancer has a very high suicide risk. Yes. When I went to this cancer hospital, Sri Shankara Cancer Hospital, there was a psychiatrist with about 30 years experience in England who had come to help there. Mm-hmm. When I went there, he said, Dr. Murthy, why are you coming to, no one comes to me, though I am available.
Though the doctors refer them, they don't come to me. Uh-huh. You know. Secondly, there was a social worker who said, I said, what are the issues? He said, oh, there are so many issues, but one issue we cannot talk about is spirituality. You know, people are very sensitive. But then I said, you know, you don't know what exactly it is to be. It's not a consultation you should offer, but you should do strengthening. So we started a program called My Emotional Health, My Choice. Yes. And put together all the evidence that is available. For example, American Cancer Institute says exercise is medicine in cancer. When I had my cancer, no one told me about that. Yeah. You know, similarly, sleeps. There are so many aspects of it. So what we need to do is saying that, look, the same way we will say take iron, take vitamins for your anemia. We have to say, look, you are vulnerable, not you are weak. You can become strong. Mansik Shakti, the title of it, which made me join you today, you know, for the next 3 days. We must say, we must start with saying that, look, for example, in the IITs, we have had lots of suicides. Everywhere, counselors were appointed. Instead of saying that, instead of saying to the students, hey, boys, you are all capable of handling this issue of emotions. Here are the things that you can do. That's right. Instead of that, we put a counselor. You say you must go to the counselor. That means again in the external point. I'm not saying that counselors are not important, but the starting point has to be the self. The point which you made. We must strengthen people and make them strong. And when they become vulnerable, they come back again to ask for help. It's a paradigm shift. And I think if we can do that in students, then we would have made a big difference to the whole thing. The life skills education, number of things are there, and I'm sure it will all happen. Thank you. Yeah, thank you, sir. What we are trying to work on this is to develop a mobile app technology and computer-based identification and say profiling of an individual. Say, for example, if a student wants, he can understand where the stress is arising from in his life, and in depending upon the data that he generates in the system, he can be guided what to do, what not to do, what kind of exercises, what kind of diet, whom to talk to, etc., etc. Whole lot of things to change, minimize the vulnerability. After identifying. So I think we have used, our challenges are maximizing protection for against any kind of mental onslaught. Absolutely. Rather than it should be any specific one. I just want to give you one the agency, all the people participating. There is a SAMHSA PTSD coach. It's an excellent model. You start with a symptom, you go to correct it, then you monitor it. You do everything yourself. You're doing it for yourself rather than for someone else. And I also feel that it's in our country, I think we have to take help of new technology, because that is, see, look how mobile phone and internet has changed life in our country. Same way, I am hopeful that in mental health, the next revolution will happen through internet and intervention, our guidance, our talking, our self-care, self-development. Say, even accessing the data. Say, you said spirituality. I mean, why are people shying about talking about when benefits and merits of spirituality in illnesses? When we know all the trials, everything, but the research data does not reach the consumers. We are unable to tell the latest finding of our own research to people. There is severe disconnect. And I hope that our project would be able to bridge some of this. Anyway, we continue to talk at this point of time. Dr. Dwivedi, over to you for concluding remarks. I would like to thank everyone again for taking the time to participate in this, and looking forward to seeing you all tomorrow in the next few days. This is a great beginning. It certainly leaves a lot of things for thought. And I really appreciate Dr. Murthy's and Dr. Agarwal's insights, along with you and Dr. Srivastav. And I'm looking forward to working with everyone to take this forward. Thank you so much, everyone.
Thank you very much. Thank you, Dr. Agarwal sir, and thank you, Professor Murthy, and everyone, all the delegates. आप सभी का स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. आप जुड़ते रहें. कल फिर मिलेंगे. आपके जो भी विचार हों, आइडियाज हों, प्रोजेक्ट हों, मुझे बताएं. हमसे जो हो सकेगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो हम करेंगे. और हम चाहते हैं कि ये संवाद आप आगे बढ़ाएं जहां आप रहते हैं, अपने घर में, परिवार में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में. लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, वह अच्छा जीवन व्यतीत करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे आचरण करें. इसी शुभ संकेत के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार.